Let's now move to the Union Territory of Jammu and Kashmir, which is known for its rich art and cultural heritage. Today we take you to mesmerizing opera show performed by Hindu Kashmiri artisans in Srinagar. The thrilling performance not only promoted the region's rich art and culture, but created a sense of unity and brotherhood. Let's have a look. Kashmir is not only known for its scenic beauty, but it is admired for its artistic treasure and folklore. For centuries, the art and culture in the region strengthened the bond between the Hindus and the Muslims. A group of Hindu Kashmiri artists from RMK Arts and Research Foundation, in collaboration with Kashmir Academy of Art, Culture and Languages, showcased opera or a musical drama in Srinagar. The show was titled Waqtuk Partav or Shadows and Blessings of Time. The purpose of this opera was to show the brotherhood and unity among the people, along with highlighting the importance of composite cultures of Kashmir. ये जो शो आज हमारा है, हम जो लेकर आए हैं यहाँ पे कश्मीर में, ये कश्मीरी लैंग्वेज में है और इस ओपेरा में आपको म्यूज़िक देखने को मिलेगा, डांस है, ड्रामा है। सभी आर्टिस्टों ने बहुत मेहनत की है। ये कश्मीरी जितना भी इसमें कल्चर दिखाया गया है, डिफरेंट शेड्स दिखाए गए हैं, जैसे फ्लावर्स है, बर्ड्स हैं और विंटर्स के बारे में दिखाया गया है कि मंथ बाय मंथ विंटर कैसे चेंज होता है और उसके बाद बाहर कैसे आती है। An opera has a story, dialogue, music and songs. Only the dialogues are written in poetry. Opera in Kashmir was introduced by Dinanath Nadim. The history of Kashmir opera begins with Bomburta Yembirzil, which Nadim Sahab wrote in 1952. It was Padma Shri Motilal Saki who continued the tradition of opera in Kashmiri. Saki's first opera was Hayatan Ziyun, which was first broadcasted and later staged at Srinagar. Due to the exodus of Kashmiri Pandits from Kashmir in 1989 to 90, the performance of opera got affected. It is now being revived and plays a significant role in promoting peace and brotherhood in the Kashmir Valley. सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इसके ऑर्गेनाइज़र को, जो जम्मू से, क्योंकि हमारा जो तहज़ीब और तमद्दुन है, जो हमारा संस्कृति है, जो हमारा विरसा है, उसको हमें मिलके, क्योंकि ये सारे लोग जो जम्मू से कश्मीरी पंडित भाई हमारे आए जिन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया, छोटे बड़े की बात नहीं, इन्होंने हमें एक चीज़ याद दिलाया कि जो हमारा चिलई कलान का मौसम, बाहर का मौसम, और हम लोगों को ये दिखाया कि हम आपसे दूर नहीं, हम आपके साथ है। तो कहीं ना कहीं हमने इनको अपने दिल से तो वैसे दूर नहीं किया, हम इनको हर बार अपने दिल में रखे हुए। As long as there is a story to tell and ideas to be aired, opera will flourish. Opera revived the tradition of folk times and added some sweet lyrics to Kashmiri literature. Opera has a great future and is liked by all.